Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now, this is another video in our series of PYQ on Constitution where we discuss previous year questions जो Constitution law में पूछे गए हैं in different law entrance exams. Starting with the first question, when was the meeting of Constituent Assembly of India convened? The correct answer to this one is option D, that is 9th December 1946 को Constituent Assembly की पहली मीटिंग करी गई थी. Constituent Assembly के बारे में डिटेल्स जानना important है, so you can read up on Constituent Assembly by yourselves. Then exchange of enclaves between India and Bangladesh कौन सी amendment के थ्रू execute हुआ था? DU-LLB 2020 का question है. The correct answer is 100th Constitutional Amendment जो partition के टाइम पे ये हुआ था. साथ ही साथ what you need to know is the concept of cession of territory. Cession of territory के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं. And the main case is the one relating to Berubari Union, जहाँ पर ये बोला गया था कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री को अपनी टेरिटरी दे रहे हो उसको सेशन माना जाएगा, उसके लिए अमेंडमेंट पास करना होगा. In which schedule of the Constitution anti-defection law is provided? The correct answer is option B, that is 10th schedule. ये आया था through the 52nd amendment. I have a full-fledged video on anti-defection law. You can go and watch the same. PU-LLB 2015 का question है ये. Then the next is Supreme Court की जो judgment है KS Puttaswamy केस में, that is related to what? I posted very recently this video that is of right to privacy, जहाँ पर मैंने ये बताया है कि KS Puttaswamy के बाद से right to privacy को एक fundamental right माना जाता है. नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल? तो अगर आप देखेंगे आपको पता ही होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट माना जाता है. दीज थ्री पीपल आर द पार्ट, दीज थ्री बॉडीज आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next is Indian Constitution recognizes minorities on the basis of what? The correct answer is option A, that is religion. Right to education was inserted in the Constitution by which amendment? It was inserted through the 86th amendment. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस amendment के through fundamental rights, fundamental duties और DPSP तीनों में ही change आया था. Next, Article 44 of the Constitution, which is basically a DPSP, it relates to Uniform Civil Code for all the citizens की एक कॉमन सिविल कोड प्रिवेल करना चाहिए फॉर ऑल द सिटीजन. DU-LLB 2020 का क्वेश्चन है ये. फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन? द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज मद्रास सेशन, जहां पर फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया था. हु समन्स द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? इनमें से कौन पार्लियामेंट की मीटिंग को समन करता है? The correct answer is option C, that is president. President is the party who summons the meeting and even he is the person who will call for a joint session अगर कोई deadlock की situation है दोनों houses के बीच में. However, ये deadlock वाली situation, joint session वाली situation does not arise at the state assembly level. With this, we come to the end of this video. Just in case you have any doubts, queries, mention the same in the comment box below. And don't worry, I will keep posting videos with respect to these PYQs. Also, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and also follow us on Instagram for more such legal updates.